Hello friends, that is Dr. Ravi Saini. Now come to the kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. तो बेसिकली प्लांट्स में जो सेल्स हैं वो यूकेरियोटिक होती हैं और क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है. Now a few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasites. कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इंसेक्टिवोरस हैं और पैरासाइट्स हैं. जैसे एग्जांपल हैं ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. लाइक ये जो है अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं और उन है ना, एंड दे यूज इंसेक्ट्स एज अ फूड. नाउ कम टू द कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplasts and cell wall mainly made up of cellulose. So basically जो cell structure है that is eukaryotic and chloroplast इनमें present है और जो cell wall है they are mainly made up of cellulose. We will study these eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Now the life cycle of plants has two distinct phases, the diploid sporophytic and the haploid gametophytic, that alternate with each other. जो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है इसमें दो डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं. जो फर्स्ट वन है दैट इज डिप्लॉयड और स्पोरोफाइटिक, और जो सेकंड जो है वो दैट इज गैमेटोफाइटिक एंड हैप्लॉइड. सो दे ऑल्टरनेट विद ईच अदर, दे आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेशन. द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स. सो जो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेजेस हैं इनकी जो लेंथ है और दे आर इफ़ दे आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो ये जो वेरिएशंस हैं दीज आर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, जो कि हमने अभी ऊपर मेंशन किए. एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सभी में डिफरेंट जो कंडीशन होती हैं इन फेजेस की होती हैं. नाउ this phenomenon is called alternation of generation, that we will study about this alternation of generation in detail in the kingdom that is mentioned in chapter 3rd. Now come to the kingdom Animalia. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. So यहाँ पे जो है they are heterotrophic. सेल जो है वो यूकेरियोटिक है बट जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड्स. जो एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे बेसिकली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट. फूड का जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में या फिर जो इंटरनल जो कैविटी उनमें होता है और जो फूड को है एज अ रिजर्व ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, दैट इज कॉल्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड. दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. सो एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं और आफ्टर ग्रोइंग इनटू अडल्ट्स उनका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है. हायर फॉर्म्स शो एलोबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स. मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन. सो इनमें जो सेंसरी और जो न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है इट इज़ ऑल्सो एडवांस फॉर्म एंड इन मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन. सो लोकोमोशन का जो कैपेसिटी है वो इनमें प्रेजेंट होती है. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. सलाइन फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4. सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज डन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल and after that there is an embryological development, and these features of various phylum are described in chapter 4.